So in the measures of dispersion, we already done the range and quartile deviation. So the next topic is the mean deviation, or you can say the average deviation is also the part of the measure of variation. We can also calculate the deviation or the dispersion or the variation by using the mean deviations. So according to the Clark and Skene, so he said that the average deviation is the average amount of scatter of the items in a distribution from either the mean or the median, ignoring the signs of the deviation. So the average that is taken of the scatter is an arithmetic mean, which accounts for the fact that this measure is often called the mean deviation. So in that we have to be calculate the deviation from each and every values. So after taking the deviation from the mean, we have to in this we ignore the minus sign. If in the deviation there is a minus sign, so we will ignore the minus sign. We have to just see the how the data is scattered, how the data is spread over through the mean point from the mean values. So we have to calculate it. So that is called the mean deviation. So how we can calculate the mean deviation? So there is a different method to calculate the mean deviation in individual series, in discrete series, and then in continuous series. So if I will talk about a simple mean, or you can say if you want to calculate the deviation from the individual series. So in the individual series, you have to take, first of all you have to calculate the deviation. You have to calculate the average. Then you have to take the deviation from each and every values. So like that, the mean deviation individual series. So for example, a series is given like that. This is the series of x 2, 5, 7, 3, 4, 6. Okay, so how we can calculate the mean deviation from that? So first of all, you can take the mean deviation from the mean, or you can take the mean deviation from median. So here we are just calculating the mean deviation from mean. So first of all, you have to calculate the average of all. How you calculate the average? 2 plus 5 plus 7 plus 3 plus 4 plus 6. So how much it will be total? Plus 6 divided by number of observation. How much? 6. So what will be the average of that? 2 plus 5, 7, 14, 17 or 27. 27 summation x is the 27 divided by n is the 6. So average will be 4.5. So we have to take the deviation from each and every values like that x. Now the deviation, you have to take the deviation x minus x bar. So x bar is the 4.5. We have to take the deviation from each and every values. 2, 5, 7, 3, 4 and 6. So if you will take the each and every values, deviation from each and every values of x. So x minus x bar is 4.5. So 2 minus 4.5. How much? 2 minus 4.5. कितना होगा? 2.5. The value will be, if you will as 2 minus 4.5. So it will be 2.5. Now 5 minus 4.5, it will be 0.5. Just remember, we will ignore the minus sign. So we will put the mode both sides. This is called the model.
the parallel line into x minus x bar, because in this mean deviation we ignore the minus sign, so we will not calculate the minus sign. Then 7 minus 4.5, तो 7 minus 4.5 कितना होगा? 2.5. 3 minus 4.5, 1.5, ignoring the minus sign. 4.4 minus 4.5, 0.5. 6 minus 4.5, 1.5. 6 minus 4.5 कितना होगा? 1.5. So when you will do the total of that, summation D divided by y by n. This will be the mean deviation from median, mean deviation from mean. So the value will be, you can do the total of that, 2.25, 2.5, 5.5, 5.5 plus 1.57, 7 plus 2, 9. So the value will be 9 divided by n. Number of observation is the 6. So value will be so it will be mean deviation from mean. The value will be 1.5. This is the mean deviation from median in individual series. So you can calculate the mean deviation from like that. In this, we just ignoring the minus sign. Okay. And if you want to calculate the same from the assume mean method, so through the assume mean method you have to instead of taking the average x bar to calculate the average from the mean in that assume mean method. This is the assume mean method, or you can say the shortcut method. This one is. This one is the assume mean method, or you can say the shortcut method, because in that we have to take the deviation from assume mean. Firstly, we have to make a value as a assume. Instead of calculating the deviation from the mean, we will take the deviation from the assume mean. So in the same case, you can write like that. Okay, I am firstly erasing all the values. Okay, so in the assume mean method, how we will calculate it? So we can calculate this value like that. So a value of x is given, and the value of x is given 2, 1, 3, 4, 6. Now you have to take the assume mean. You have to be assume a mean instead of calculating the average, actual mean. So we can use the assume mean method. For example, 3, here we can assume the 3 as a mean. So we have to be assume the 3 as a mean value. Now we have to take the deviation from the assume mean.
x minus a. So 2 minus a means 3. 2 minus 3 minus 1. We will ignoring the minus sign. We will ignoring the minus sign. So 1, then 1 minus 1, 1 minus 3 minus 2. We will ignoring the minus sign. 3 minus 3 0. 4 minus 3 1. 6 minus 3 3. So what will be the total summation d? The value will be, the total value will be, hello, yes, yes. Mhm. Can you call me after the half hour because I am in the class right now. I am in the class right now. Can you call me after the 12:30? Okay, so the total of that summation d will be the 7. So you can use the formula like the summation d, summation d divided by n. So what will be the, it is the mean deviation from mean. So the summation d is the 7 divided by n is equal to total number of observation is the 5. So the value of mean deviation will be कितनी हो जाएगी 1.4. तो 1.4 will be the answer in case of we are calculating from the assume mean method. And you are, if you want to calculate the coefficient of mean deviation, coefficient of mean deviation. So in the case of the coefficient of mean deviation, you have to be calculate like that, mean deviation from mean divided by the x bar means mean. तो mean deviation हमने निकाल लिया, कितना आएगा 1.4 आया है, डिवाइड बाई x बार कितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3, 2 plus 1 3 3 6 10 16, 16 डिवाइड बाई 5, तो 3.2 इसका मीन वैल्यू आएगी. तो इसको 3.2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीन. तो ये हमारा जो भी आएगा आंसर वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा. ये तो था ऑल अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज. अगर इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट इन द डिस्क्रीट सीरीज. So that was the absolute measure. Coefficient is the relative measure. मैंने बताया था कि जो रेशियो में अगर कैलकुलेट परसेंटेज में हम कुछ कैलकुलेट करेंगे वो रिलेटिव मेजर होगा और किसी यूनिट में प्योर यूनिट में जो भी जिस भी यूनिट में उसी यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एब्सोल्यूट मेजर होगा. और जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा रिलेटिव मेजर होगा. तो इसमें देखो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज अबाउट द विच इट कैलकुलेटेड. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर मीन से आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हो तो आपका मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन आ जाएगा. अगर मीडियन से आप कैलकुलेट करते हो मीन डेविएशन तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन. तो दोनों तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको. अब ये देखो ये कंटिन्यूस सीरीज का दे रखा है. कंटिन्यूस सीरीज से पहले मैं आपका डिस्क्रीट सीरीज का मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करोगे इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी एक्स की वैल्यू होती है और आपके पास एफ की वैल्यू होती है. अगर इसको 2 5 4 अगर 6, ये आपके पास एक्स की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है 2 3 5 और 4, ये फ्रीक्वेंसी है. तो इसमें क्या करोगे, अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से आपका मीन डेविएशन निकालना है,
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर मीन से निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। इसका मीन कैसे निकालते हैं, उसमें अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा मीन निकालने का, समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये था हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें या तो आप एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 3 into 1 3, 2 into 2 4, 15, 20 and 24। तो टोटल समेशन एफ एक्स कितना आ गया ये, और ये टोटल एन की वैल्यू क्या आएगी, एन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एफ होता है। तो इसमें कितना आएगा, 3 6 11 और 5, तो ये 4 14, इसका टोटल आएगा हमारे पास 3 into 4 7, 7 into 15 22, 42, 42 into 24 60, 66। तो इसमें आप पुट कर सकते हो समेशन एफ एक्स कितना है 66, और टोटल एन कितना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15, तो इसका कितना है 4.4। सो आपको क्या लेना है, आप हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, आप आपको डेविएशन लेना है, डी आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे डी, आप एक्स माइनस एक्स बार, माइनस साइन इग्नोर करेंगे। अब इसमें डेविएशन लो हर एक एक्स की वैल्यू का, 3 माइनस 4.4, तो 1.4 आ गया, माइनस साइन इग्नोर करो। 2 माइनस 4.4 कितना आ गया, 2.4 आ गया। 5 माइनस 4.4 कितना आएगा, 0.6 आएगा। 4 माइनस 4.4 कितना आएगा, 0.4। 6 माइनस 4.4 1.6। तो टोटल इसका कर लो समेशन डी, समेशन डी कितना आ गया टोटल हमारा, नहीं इससे पहले हम क्या करेंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और डी को, क्योंकि हमें समेशन एफ डी चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, ये 4.4 आया था हमारा, मीन कितना आया था 4.4, जो मीन की वैल्यू आई थी, हम लिख देता हूँ यहाँ पे, जरूरत पड़ेगी कोफिशिएंट निकालेंगे तब। अब इसको अपने क्या करना है, डी को एफ इंटू डी डैश डी, एफ को डी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो ये होगा समेशन एफ डी डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर एज्यूमिन होता तो एज्यूमिन ऐड कर देते हैं, अगर एज्यूमिन लेते हैं तो ए प्लस ऐसे हम लगा देते हैं, ए अगर एज्यूमिन से हम निकालते हैं तो ए को हम प्लस कर देते हैं एज्यूमिन को। जो पीछे वो हमने किया था ना क्वेश्चन, उसमें ए ऐड नहीं किया था हमने एज्यूमिन, तो एज्यूमिन और ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो समेशन एफ डी है, इसमें एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 1.4 1.4, 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2 4.8, then 3 multiply by 0.6 1.8, 5 multiply by 0.4 2, 1.6 multiply by 4 6.4, the total will be 16.4। तो you can put the value here 16.4 divided by n क्या है, n is equal to summation f, so what will the value of summation f is 15। so you can calculate the mean deviation from mean, so it the value will be like something
0.09 something like that. So this will be the मीन डेविएशन फ्रॉम, अगर कोफिशिएंट निकालना तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन और एवरेज। तो इसमें हमारी जो वैल्यू आई थी ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी लगभग, ये कैलकुलेट कर डिवाइड बाय मीन की वैल्यू क्या थी 4.4, इससे डिवाइड कर दो आप, वो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखो कंटिन्यूस सीरीज का, कंटिन्यूस सीरीज ऊपर देखो एग्जांपल दिया हुआ है कंटिन्यूस सीरीज का हमारे पास, तो इसको हम सोल्व करते हैं कंटिन्यूस सीरीज वाले को। आप इसको मीडियन से भी सोल्व कर सकते हो, सेम यही है, बस पहले आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, बाकी सब फॉर्मूला आप डेविएशन लोगे फिर माइनस साइन को इग्नोर करोगे, बाकी सेम प्रोसीजर सेम है सारा का सारा। अब ये देखो कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास वैल्यू दे रखी, कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास इंटरवल क्लास होता है, वो कंटिन्यूस सीरीज होती है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन, द वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 2 to 4, so it's given 2 to 4, 4 to 8, that's the interclass is given, 6 to 8, 8 to 10. So you can, first of all we have to calculate the midpoint. Midpoint 2 to 4, the midpoint is 3, 5, 7 or 9. Then we have frequency is given, then we have to take the deviation from the mean value. So how you can calculate the mean value? So you can calculate the mean value by summation fd divided by n. So summation fd कितना था, summation fd divided by n, so that is the 5 point. So mean value is given here, a plus summation fd. So for mean value you have to be, first of all take the deviation if you want to calculate it from the assumed mean. So here the 5 we have assumed the 5 as the, you have to be, you assume the, for example we have assumed the 5 as a assumed mean, then take the deviation from the x value from each from the assumed mean. X minus 5 means 3 minus 5 minus 2. So we are not ignoring the sign because we are calculating the mean. But whenever we are calculating the mean, we cannot ignore the sign. But when we are calculating the mean deviation, then we have to ignore the sign. Minus 2, then 3, 5 minus 5, 0, then 7 minus 5, 2, then 9 minus 5, 4. Then multiply the deviation from the frequency. 3 multiplied by minus 2, minus 6. 4 multiplied by 0, 0. 2 multiplied by 2, 4. And 1 multiplied by 4, 4. So it will be, summation fd will be 2, value of 2. And assumed mean was the 5. So this is the formula to calculate the mean value. A plus summation fd divided by n. A assumed mean 5 plus summation fd 2 divided by n. N in the total observation is given is the 10. This is the n. So it will be 5.2. So after calculating the mean value, we have to take the deviation of each and every value from the mean deviation. So you can make like that. So in that we can ignore the sign. So x minus x bar, x value is the 3. 3 minus 5.2, that is the 2.2. 5 minus 5.2, 0.2. 7 minus 5.2, 1.8. 9 minus 5.2, 3.8. After that we have to multiply that from the value of f. So 2.2 multiplied by
3 6.6, 0.2 multiplied by 4 0.8, 1.8 multiplied by 7 3.6, 3.8 multiplied by 1 3.8. Then we use the formula summation f. You can write like that, or you can write summation f x minus x bar divided by n. So the summation f value, the summation of x minus x bar value is the 14.8 divided by total number of observation 10. It will be 1.48. एंड कोफिशिएंट निकालोगे तो मीन डेविएशन, ये हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, तो उसका फॉर्मूला कोफिशिएंट का क्या आएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन और एक्स बार. तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 1.48 डिवाइड बाय मीन वैल्यू इज द 5.2. so you can calculate the coefficient of mean deviation. ऐसे कोफिशिएंट और ये हमें दोनों हमने निकाल लिए. अगर मीडियन से निकालना है तो सेम हम पहले हम यहाँ पे हमने मीन कैलकुलेट किया था, तो अब मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो. तो मीडियन कैलकुलेट कैसे करोगे, पहले आप इंटरवल क्लास फाइंड आउट करोगे n डिवाइड बाई 2 करके, ठीक है, उससे मीडियन क्लास पता चल जाएगा. मीडियन क्लास के बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, n प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई इंटरवल. ये फॉर्मूला आप कंटिन्यूस सीरीज में आप यूज करोगे, इससे हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन वैल्यू आ जाएगी. तो आप क्या करोगे, यहाँ तो हमने किससे डेविएशन लिया था, एक्स बार से लिया था, उसमें क्या करो एक्स माइनस मीडियन, मीडियन की वैल्यू से आप डेविएशन लोगे हर वैल्यू का. मीडियन से डेविएशन लेके फिर आपको एफ से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा. बस बाकी सेम प्रोसीजर ऐसी ही है. फिर आपका मीन की जगह यहाँ पे अगर कोफिशिएंट निकालोगे, मीन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा. यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा. और यहाँ पे x की जगह, x बार की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा. ये डेविएशन फ्रॉम m यहाँ छोटा सा लिख सकते हो, m dm. तो इस तरह से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो. मीडियन कैलकुलेट करके उससे आपको डेविएशन लेना है, x बार की बजाय एवरेज मीन की बजाय हमें मीडियन से डेविएशन लेना पड़ेगा. अगर यहाँ पे हमारे पहले x डिवाइड बाई 2 करके हम इंटरवल की कौन सी इंटरवल क्लास में हमारा मीडियन लाई करता है, फिर x f है तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10, ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. फिर 10 है, n डिवाइड बाई 2 है, तो 10 बाई 2 5. 5 कौन सी इंटरवल क्लास में लाई करता है, हमारा 7 है, ये सबसे ऊपर, ये हमारा लाई करता है 4 से 6 वाले क्लास में. तो 4 हमारे पास लोअर क्लास हो जाएगी, n डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 3, ये हमारा CF हो जाएगा. 7 के सामने ये 4 हमारा, तो हमारा 2 माइनस 5 माइनस 3 हो जाएगा, और इसके सामने 4 है, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इंटरवल कितना है हर एक के बीच में 2 का. तो ऐसे करके हम मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे. मीडियन की वैल्यू निकालने के बाद उससे हम डेविएशन लेंगे हर वैल्यू. तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. क्या, तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट में भी, इंडिविजुअल में भी आप निकाल सकते हो, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हमारा सारा आज मीन डेविएशन का था. तो इस तरह से आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज तीनों में आप कैलकुलेट कर सकते हो. मीन डेविएशन मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हो और मीडियन से भी. मैंने मीन से भी बता दिया और मीडियन से भी बता दिया कैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे. लेकिन जब मीन डेविएशन ना सॉरी मीन डेविएशन मीन डेविएशन निकालोगे तो एक बात का ध्यान रखना, इसमें आप जो भी है डेविएशन होगी तो माइनस साइन यहाँ पे इग्नोर हो जाएंगे.
ठीक है, माइनस साइन इग्नोर, बट मीन अगर कैलकुलेट करोगे वहां पे साइन इग्नोर नहीं होंगे। अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे माइनस साइन तो लगेगी, लेकिन जब मीन डेविएशन कैलकुलेट करोगे उस टाइम इग्नोर होगा ये। So it was all about the mean deviation. Mean deviation. If you having any doubt, you can ask me and comment me. So thank you so much for today lecture. We will meet you in next class in the standard deviation.